ड्रोन होता क्या है? नॉर्मली लोग क्या जानते हैं, जो शादी में उड़ता है वही ड्रोन। हम आदमी को उड़ा सकते हैं, बट वी आर नॉट सर्टिफाइड टू डू दैट। कौन सी चीज आपको इंस्पायर की कि आप ड्रोन इंडस्ट्री में आ गए, और क्या आपको पहले कोई एक्सपीरियंस? You know, when government has already declared me Buddha, senior citizen, that is when I am doing entry in this market. इंडिया में एयर टैक्सी आ जाएगी, या वर्ल्ड में एयर टैक्सी आएगी, कोई भी ट्रेवल करने के लिए अपनी टैक्सी लेके जाए और कहीं भी जा सकते हैं। This is going to come and come very soon. तब तो मेरे जैसे आदमी को वो आसानी से उड़ा सकती है। हाँ जी, we have mounted 84 rocket launcher on it. तो जो AI है वो ड्रोन इंडस्ट्री में कैसे हेल्प कर रही है? AI एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। सडनली यू मे फाइंड दैट योर ड्रोन इज इन द कंट्रोल ऑफ समबडी एल्स। आप एक फ्रेश इंजीनियर को रिक्रूट करते हो, ट्रेन करते हो, एंड वो रेडी होता है और फिर दूसरी जगह जॉब ढूंढने चला जाता है। तो अभी जो आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है? 2 कंपनियां चालू होती है, तो उसमें से एक कंपनी पहले 2 साल के अंदर तो बंद हो जाती है। Many time in the political forums, people talk about unemployment and other things. As an industry owner, एक चीज बोल रहा हूँ, getting employees is more difficult. I will say that by January 2025, we will be able to give you 100% made in India. वेलकम सर, लाइफ इन मिनट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपना करियर ड्रोन इंडस्ट्री में कैसे स्टार्ट किया था, और इससे पहले आपका करियर क्या था? तो हम चालू करते हैं, मैं कॉलेज स्टडी से। मैं कॉलेज इंजीनियरिंग किया IIT खड़गपुर से। मैं पास आउट किया 1980 में। उसके बाद में मैं कुछ एक कंपनी में पावर सेक्टर रिलेटेड में ही काम किया। बाद में अस्वाइल गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और UGVCL GUVNL मैं 2013 तक काम किया। 2013 I retired from you can say took an early retirement from UGVCL and came out. And initially I was working as a consultant for privatization of electricity distribution in Nigeria and other power sector related activities. I was consultant with Mercados. Then I was also consultant with KPMG for some project and Power Finance Corporation. Then somewhere around 2013, just present company was started. However, in the field of drone, we came somewhere around 2018. And that was the beginning. Initially, we worked mainly हम जो ड्रोन सर्विसेज सेक्टर में काम किया, अलग अलग प्रोजेक्ट का एरियल मैपिंग करना। उसके बाद में स्लोली समवेयर अराउंड 2021 से हम ड्रोन मेकिंग के रिलेटेड एक्टिविटीज बिगिन किया। सॉरी बट लाइक आई वांट टू नो कि ड्रोन होता क्या है? नॉर्मली लोग क्या जानते हैं, जो शादी में उड़ता है वही ड्रोन होता है, पर ड्रोन रियल में होता क्या है, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो? देखो, ड्रोन या अनमैन एरियल सिस्टम is remotely operated एरियल सिस्टम है, जो एक मल्टीकॉप्टर भी हो सकता है या फिक्स विंग भी हो सकता है,
or it can be unmanned surface vehicle running on the water. Everything can be considered. ओके। तो जैसे आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड एक सिविल इंजीनियर का था और आप ड्रोन इंडस्ट्री में आए, तो ऐसी कौन सी चीज आपको इंस्पायर की कि आप ड्रोन इंडस्ट्री में आ गए, और क्या आपको पहले कोई एक्सपीरियंस था या फिर एकदम न्यू एक्सपीरियंस के साथ आप आए? देखो, आज एक चीज है कि आप कोई भी इंजीनियरिंग पढ़े हैं तो आप न्यूटन्स लॉ पढ़े हुए हैं, ओम्स लॉ पढ़े हुए हैं, किर्चॉफ्स लॉ पढ़ते हैं, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ते हैं, एंड ड्रोन है कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो, सब में वही न्यूटन्स लॉ अप्लाइड है। राइट। डिफरेंस ये है कि आप उनको अलग जगह पे अप्लाई करते हो। बाकी ड्रोन का स्ट्रक्चर और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इज ऑल द सेम। ओके। तो हमारे लिए वो कोई फर्क नहीं रखता है कि हम न्यूटन्स लॉ कहाँ यूज करते हैं। द न्यूटन्स लॉ इज करेक्ट and you need to understand how to apply it. So for me it is the same. Right. And then apart from that, मैंने पावर सेक्टर में वर्क किया, तो even though I was initially heading civil department, and I was also heading IT department and lot of IT systems, स्मार्ट ग्रिड, स्काडा, उस पे भी मैंने काम किया। सो आई डू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेराइटी ऑफ एक्सपोजर डिफरेंट सिस्टम्स, एंड दैट इज व्हाट वी यूज। एंड देन इट इज ऑलवेज दैट ए कंपनी इज नॉट वन मैन। आई गॉट totally, as on today in a company, 60 plus engineers. Okay. And they belong to different field. I have got civil engineers also working with me, architect also working with me, mechanical engineer also working with me, aeronautical engineers working with me, MTechs in a geometric working with me. So all together, with a different kind of a specialization, give the strength to the company for what it is doing today. Okay. At this age, मैं खाली कंपनी को एक डायरेक्शन देने का काम करता हूँ। Okay. तो 2018 to 2024 अभी तक आपने किस टाइप की अभी भी ड्रोन बनाए हैं और किस किस एप्लीकेशन के लिए ड्रोन बनाए हैं? क्योंकि जैसे मैंने देखा है कि बाकी जो कंपनी वो छोटे ड्रोन पे काम कर रही है, लेकिन जो एनरकॉम पे एक कंपनी है जो हमेशा कुछ अलग करना चाह रही है, एक बड़े बड़े ड्रोन पे काम कर रही है। जैसे कि मैंने देखा आपकी नीचे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कि आप बहुत बड़े साइज के ड्रोन बना रहे हैं, तो आपने किस किस एप्लीकेशन के लिए अभी तक ड्रोन बनाए हैं? देखो, हमने छोटे ड्रोन से चालू करके आज के दिन में maximum thrust of around 400 kg. Okay. So factor of safety 2 ले तो हम still can have a all up weight of near 200 kg. Okay. So safely with this type of a drone, we are able to take a maximum load nearly 100 kg. तब तो मेरे जैसे आदमी को आसानी से उड़ा सकती है। हाँ जी, हम आदमी को उड़ा सकते हैं, बट वी आर नॉट सर्टिफाइड टू डू दैट, बिकॉज व्हेन हमें कोई एक ह्यूमन बीइंग को उड़ा के ले जाना है, हमें काफी कुछ सेफ्टी कंसर्न्स
to avoid any possibility of a accident, we have to do it. आज हम एक मटेरियल ले जाते हैं तो even if accident happens, there is no life loss. And life is a very costly Right. thing. It cannot be valued. And that is why जब भी human being comes in, the safety standards required and regulations which are required are quite complex. Okay. आज के दिन में हमारे ड्रोन्स लॉजिस्टिक एप्लीकेशन के लिए भी यूज होते हैं. We have mounted 84 rocket launcher on it. We have been trying to use it for different kind of defense applications. We have used our drones for some of the aerial mapping activities in a large areas. And now one of design which we have started implementing is a multi-role drone which is capable of traveling at very high speed, and which will also be able to work for the defense as a command and control center. Okay. At low height, like you have a AWACS for controlling at more height the fighters and other Air Force thing. Same way, when you want territorial army to be guided and controlled, you need a command and control center which is also capable of defending the army in case of a high risk coming in. Okay. So these are some of the things which we are into. Okay. So if we talk about human safety, Yes. एयर टैक्सी जो अभी बात कर रहे हैं, हर एक किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इंडिया में एयर टैक्सी आ जाएगी या वर्ल्ड में एयर टैक्सी आएगी कि कोई भी ट्रैवल करने के लिए अपने टैक्सी लेके जाएगा और इधर उधर कहीं भी जा सकता है. तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, एयर टैक्सी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट व्हेन यू थिंक अबाउट के multiple air taxis start moving around in a random way in the sky of a city, then you will have air collisions also. Okay. So we do need to define the aerial roads or routes to have their movements well organized, the communication, obstacle avoidance. Otherwise, you will have a very high accident and life loss. Like you have in a aerial traffic, ATC keeps on controlling the aircrafts at a different altitude and slowly guiding them to landing and giving them a permission to take off and follow certain air corridors. Same way, you will need the aerial highways to be defined for air taxi. You will need their landing and charging stations to be defined. You will need their safety standards to very high detail to be defined. Otherwise, this can be a dangerous thing. But certainly, this is going to come and come very soon. And lifting 4-5 passengers today is an easy job. But the regulations to control the traffic and related safety standards are not that easy to implement. तो And क्या that is, within 10 year ये आ जाएगा? I will expect it to be coming in earlier than that. Okay. Already, world over, many trials are going on. And I think that in next 3-4 years, we should start
having some activities going on. तो क्या आपका भी कोई प्लान है ऐसे? Yes, sooner or later we will be planning something. ओके, तो अगर मैं हम डिस्कस करें कि इंडियन जो मिलिट्री है जिसमें तीनों ही आ जाते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो क्या अगर आज कोई भी वॉर हो तो क्या इंडिया उसके लिए रेडी है? देखो, नाउ व्हेन आप वॉर के लिए बात करते हो तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। आप रेडी हो, रेडी की डेफिनेशन क्या है? कि इंडिया के पास इतना आज से 200 साल पहले वो आर्मर पहन के तलवार लेके आर्मी निकलती थी और उसको रेडी बोला जाता था। बट आज के दिन में रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपके एनिमी के पास क्या टेक्नोलॉजी है और उसके कंपैरिजन में आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है। और यहाँ हमारा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, वहाँ again our enemy countries do have lot of capabilities in terms of AI and electronics. So question is how fast India is able to adopt, how we control. Now ये सब में एक बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में how one is able to sabotage anything. So a drone flying, then what is the software being used? How they are being controlled? Are we using some foreign softwares or are they local made? Because that is where suddenly you may find that your drone is in the control of somebody else. So how do you manage this part? And this all kind of factors, the flight controllers. Now India has started making a flight controllers. Okay. And then software for the flight controller. And our company also has developed a safe pilot, which will be fully compliant to DGCA, and we are going to be officially launching it also soon. Okay. And we are doing reviews about this on how well it is performing before launching it in the market. Okay. So these are some of the activities which our company has been doing. Okay. तो जो AI है वो ड्रोन इंडस्ट्री में कैसे हेल्प कर रही है? AI एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आज एक सिंपल हम एक्टिविटी लें कि काउंटिंग द ट्रीज इन वन फॉरेस्ट। आप मैन्युअली काउंट करोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। नॉट पॉसिबल। अब सोलर प्लांट लो, तो सोलर प्लांट के अंदर अगेन you do need to have certain defects identified. Now again, if you are analyzing manually the images, it's time consuming. So again, AI can help you that which are the faulty cells, which are the faulty diodes, or string failures, or robots, cleaning robots failures, all that can be done. And total cost of things can be reduced. When it comes to defense and such thing, we can identify armored vehicle, tanks, and target can lock automatically and fire. Okay. The armaments or combat drones can be effectively controlled to destroy enemy targets. So there are many uses where AI can come into picture. Okay. तो जो लॉजिस्टिक है और जो आर्मी है, मिलिट्री, इसके अलावा और क्या एप्लीकेशन है ड्रोन की? Surveillance. Okay. Then we can be using it for aerial mapping. It can be used for entertainment. It can be used for perimeter security.
of the industry, for borders. ओके। जो हम एनरकॉम की बात करें, एनरकॉम का नेक्स्ट 10 ईयर का गोल क्या है? See, from last 4 years, Enercomp has been almost doubling its revenue every year, year to year. ओके। About we have been having 80 to 90% growth rate, and we expect the same to be continued for future. We are mainly concentrated today on heavy lift drones, and we are trying to see that we develop a good combat drones or multi-role drones for defense applications. ओके। तो सर आज इस एज में भी आप 60 इंजीनियर को आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो मैनेज 60 इंजीनियर को मैनेज करने में आपको कौन कौन सी चैलेंज का फेस करना पड़ रहा है? देखो, लाइक ये ओनर ऑफ ए कंपनी, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है? ये एक जो आज के दिन में इश्यू है कि दिस इज अ न्यूली इवॉल्विंग फील्ड, तो qualified engineers are limited. So any good engineer, every company will like to have. तो यहाँ एक इंजीनियर को अलग अलग जगह से जॉब ऑफर्स आती रहती है, सो एट्रिशन रेट थोड़ा हाई रहता है और उसको कंट्रोल करना एक मेजर एस्पेक्ट रहती है। एंड आप एक फ्रेश इंजीनियर को रिक्रूट करते हो, ट्रेन करते हो, एंड वो रेडी होता है और फिर दूसरी जगह जॉब ढूंढने चला जाता है। तो ये सब इश्यूज एक मेजर चैलेंज रहते हैं। ओके। ओके, तो जो एनरकॉम है वो बूटस्ट्रैप है या फिर इन्वेस्टेड है? आज के दिन में हमने अबाउट 20% ऑफ हमारी इक्विटी डाइल्यूट की हुई है, ओके। एंड 80% इज अ फैमिली ओन। ओके। तो जो न्यू इन्वेस्टर है या जो न्यू जनरेशन है जो ड्रोन इंडस्ट्री में आना चाहती है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? देखो, ड्रोन इंडस्ट्री में youngsters, they come, they have a good ideas, they probably have a more technical understanding than old person like me will be able. But एक जो होता है कि मार्केट कॉम्पिटिटिव भी हो गया है, तो वी नीड टू सी कि हम ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो हमेशा कोई भी एक्टिविटी चालू करते हैं तो हमें ये सोचना जरूरी है कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे। आप देखोगे कि 2 कंपनियां चालू होती है तो उसमें से एक कंपनी पहले 2 साल के अंदर तो बंद हो जाती है, सो 50% कंपनीज क्लोज डाउन। उनका रीजन एक ही है कि they start with good dreams, but they are not able to manage their finances, and they collapse. So I will say that people starting a new company should remain conservative. Don't go for just picking up order at any crazy rates. Think about survival. Keep some funds reserved for survival so that you are able to continue for couple of years. Once you are settled,
then this is a business where growth is going to be excellent and it is worth entry into. जो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल रेगुलेशन ड्रोन इंडस्ट्री के लिए लेके आए हैं, तो वो कितने हेल्पफुल है या फिर कहीं ना कहीं ड्रोन इंडस्ट्री को बैकफायर कर रहे हैं? देखो, मैं बोलूंगा कि रेगुलेशंस, ड्रोन रेगुलेशन 2021 जो आया, and when it came, there was some problem in North India, and people thought that the regulation will not be there. But government took a clear stand that if some two people do a notorious activity using a drone, you cannot stop others from using a drone. Right. Like the same happens with the road. One person may use a car for murder, but that does not mean that you stop the road traffic. Right. And that is where I really appreciate that in those environments also government went ahead and brought in the drone regulation, and they are bringing very soon some further amendments, and the things are even opening up soon for BVLOS. Okay. So it is going good. And regulations, everybody expect कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, but Right. मैं गवर्नमेंट में रह के आया हूँ, we have to think from both sides कि they have to implement also. So you cannot have some regulation which is good for everybody. There will be some hindrances, but overall I will say it is very good. तो जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया मार्केट है वो कैसा है? Market is big. Today, if you are able to make it, there is always people to buy it. And जो requirement आज की है कि how do you replace Chinese parts? Right. How you make 100% made in India drones? आज के दिन में we are using motors made in India, we are using a ESC made in India, we have started using flight controller made in India, software made in India. The few things like a sensor and the communication channel, again, still though we are not converted, but at least communication channel, we are expecting that within 1 or 2 months, again, we'll be fully on Indian. Okay. So the drone flying platform, I will say that by January 2025, we'll be able to give you 100% made in India. Okay, great. Only sensors yet. Some time will be required. Okay. But other than that, we'll be totally made in India drone. Okay. तो अभी जो आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है और आप उनसे अलग क्या कर रहे हैं? देखो, कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि आप ऑलरेडी टॉप 10 में, इंडिया की टॉप 10 इंडस्ट्री में आ चुके हैं, ड्रोन इंडस्ट्री में। मैं ये सब्जेक्ट पे कमेंट कम करता हूँ। Okay. मैं तो एक ही चीज सोचता हूँ कि हाउ आई इम्प्रूव एंड आई बिकम बेटर। Okay. देखो, टर्नओवर में there are companies which are better than us, and every company works in a different segments, and we relatively late entrant, and me in particular, you were late entrant at a very, when government has already declared me अरे रिटायर Buddha.
senior citizen, that is when I am doing entry in this market. Hmm. And still, I will say that Okay. we are doing good. तो अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो यंग जनरेशन जो इंजीनियर है वो ड्रोन इंडस्ट्री में एज ए इंजीनियर या फिर एज ए पायलट आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखो, आज के दिन में विथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, any engineer who is good has no problem of getting a job. राइट. So, India, though many times in the political forums people talk about unemployment and other things, मैं एज अ इंडस्ट्री ओनर एक चीज बोल रहा हूँ कि गेटिंग एम्प्लॉइज इज मोर डिफिकल्ट हाँ. टू द एक्सटेंट कि इवन एक सही ऑफिस बॉय भी आज के दिन में डिफिकल्ट है. सो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज समथिंग विच इज existing for people who don't want to do the hard work. Right. Now coming to drone industry in particular, with the growth all across, whether it is the data capture services or data processing services or making the drones, everywhere there is a tremendous growth. So anybody getting in this field, I will say they are to expect boom which came in IT industry. The same situation is going to be in the drone industry. Okay. Okay, thank you sir for Thank giving you. your time. My हम pleasure. होप करते हैं कि एक और हम पॉडकास्ट करेंगे इसी टॉपिक पे और डिटेल में. तब तक के लिए हमारे दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि आप ये ड्रोन का पॉडकास्ट देखिए और जो अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है ड्रोन इंडस्ट्री में उसके साथ जुड़ने का ट्राई कीजिए. और अगर कोई भी है कि जो एनरकॉम में आके अपना देखना चाह रहे हैं कि ड्रोन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उड़ाए जाते हैं, तो वो भी अहमदाबाद में एक कंपनी है, आप यहाँ आके देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you very much.